Okay, so here I have two set of questions, 12 and 13. So first we'll solve question number 12. Find the value of k such that line through A and B is parallel to the line through C and D. Again, very good question. बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से, जो कि ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कर ही रखा है, पर चलिए फिर भी देखते हैं। तो सच दैट अ लाइन थ्रू ए एंड बी, तो दो पॉइंट है, एक है ए और एक है बी। अब इन पॉइंट से जो लाइन पास कर रहा है वो पैरेलल है, इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू सी एंड डी। तो और दो पॉइंट है सी और डी, तो ये मान लीजिए डी और ये मान लीजिए सी। तो और एक लाइन है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। दीज बोथ दीज लाइंस आर पैरेलल। Whenever you see the word parallel or perpendicular, you need to write the relationship between their slopes. So m1 is equal to m2, okay, because they are parallel. So let it be L1 and let this line be L2. Now इनका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है, तो कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 3, k, बी का कोऑर्डिनेट है 2, 7, सी का कोऑर्डिनेट है -1, 4 एंड डी का कोऑर्डिनेट है 0, 6। तो चलिए L1 का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। So since there are 2 points, so we will solve it by 2 point form. 2 point form में जो स्लोप होता है m1, formula is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So we'll substitute the formula here. m1 is equal to y2 is 7 minus y1 is k divided by x2 is 2 minus 3. So m1 is equal to 7 minus k divided by -1. Similarly, to calculate m2, we have again y2 minus y1, which is y2 and this is y1, 6 minus 4 divided by x2, that is 0 minus -1. So m2 will be 2 divided by minus and minus gets plus and 2 by 1, that is 2. So by this relation, m1 is equal to m2, that is 7 minus k divided by -1 is equal to 2. Simply 7 minus k is equal to -2. So k is equal to, k goes there, -2 comes here. So plus k and then 7 plus 2 is 9. So k is equal to 9 is the correct answer. So that's all about question number 12. Let's do question number 13. Given two straight lines. So let's write L1 first. L1 is 3x minus 2y is equal to 5 and L2 is 2x plus ky plus 7 is equal to 0. So again, we need to find the value of k for which these given lines are parallel to each other and perpendicular to each other. So a nice revision to the previously discussed topic and the question. So first part, parallelism.
if they are parallel to each other. So we will convert or rearrange these equations in the form of y is equal to mx plus c. Okay, L1 माइनस टू वाई यहीं रहेगा फर्स्ट स्टेप में, और 5 जो राइट साइड में है उसके साथ आ जाएगा -3x. नाउ y stays here, so 5 by -2, then -3x divided by -2. तो ठीक से अगर लिखें तो ये हो जाएगा -5/2 माइनस और माइनस प्लस 3/2x. सो ऑब्वियसली y लेफ्ट साइड में दिख ही रहा है, और यहाँ हो गया x के साथ में आ गया है m, तो यहाँ x के साथ आ गया है हमारा m, और ये जो है -5/2 दिस इज c. सो m ओनली m इज 3/2. तो ये था लाइन 1 के लिए, तो ये m नहीं रहेगा, ये m1 बन जाएगा. सो वी हैव m1 एज which is equal to 3/2. Now let's do it for line 2. So again L2, ky stays in on the left side, 7 goes there and minus, and 2x goes there on the right, so 2x becomes -2x. See, this 2x goes there, 7 goes there, so -2x -7. So again y is equal to -2 by k x minus 7, sorry it's k, 7 by k. So we need our m2, so m2 is what, -2 by k. Let's write on the right side, m2 is equal to -2 by k. So see, it's already mentioned that they are parallel to each other. So when they are parallel to each other, m1 is equal to m2. M1 will be 3/2 is equal to m2, which is -2 by k. So we are cross multiplying 2 into -2, we'll get -4, and k goes here, and this 3 comes here. So it becomes k is equal to -4/3. So we are doing the part 2, perpendicularism, when they are perpendicular. So we already know the relation when they are perpendicular. It's m1 into m2 is equal to -1. Let's highlight this. So we already know what is m1, we already know what is m2. So straight away we can just put both of these values of m1 and m2 in this relation. So m1 is 3/2 into m2 is -2 by k, which is equal to -1. 3 into 2 is -6, and this is 2k, which is equal to -1. Minus minus gets cancelled, so 2k becomes 6, where k is equal to 6/2, that is 3. So we have our first answer. This is the first answer, and this one is the second answer. So let's solve question number 14. ABCD is a rhombus. The coordinates of A and C are 3, 6 and 1 -1, 2 respectively. So let's draw the rhombus first. This is A, this is B, this is C, and the fourth side, the fourth vertices
This is D. BD and AC are diagonals. So given here is ABCD is a rhombus with AC and BD as diagonals. Okay. It is a property of rhombus that AC and BD are perpendicular to each other, or better to say, AO is perpendicular to BD. Let me write the property here. Property of rhombus: diagonals bisect each other at 90 degree. Apart from rhombus, square also has the same property. Here the coordinates of A and C are given 3, 6 and -1, 2. Very clearly we can see that point A and C are given. So we can find the slope of line AC by 2-point form. So let me write here. Why 2-point form? Because we have 2 points, that is A and C. So under 2-point form, the slope will be y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So putting the values here, y2 is 2 and y1 is 6. So 2 minus 6 divided by -1 minus 3. Therefore, m is equal to -4 divided by -4. In fact, it gets cancelled. Finally, m is equal to 1. Now, let me write here line AC. So it will be a good identifier in that case. So for line AC, I can write M1. Okay. So let me assume L1. So L1 is line AC. So M1 is 1. Now, since by this property that AC and BD are diagonals and they bisect each other at 90 degree, already I have said that AC is perpendicular to BD. So since AC is perpendicular to BD, since AC is perpendicular to BD, therefore we can clearly state that M1 into M2 is equal to -1. Okay. So here M1 is slope of line AC and M2 is slope of line BD. So let's calculate M2 here. M2 is -1 upon M1. So M2 will be -1 upon 1 will be -1 only. So this is M2, which means we calculated the slope of BD. Now, what is the reason behind calculating the slope of BD? Because they have asked us to find the equation of BD. We have one point with that is O. Are you all able to see here? See, this is the center point. This is O. So, in order to find the equation of BD, we have number one slope and we need point O. Okay. A while ago, I said that the diagonals bisect each other. Bisect means that AO is equal to OC, which means that O is the midpoint here, right? By
property of rhombus, comma, O is the midpoint of AC. Or you can also say that O is the midpoint of BD. But since we don't have B and D, so it's no use to write that line here. So I can directly write the midpoint formula. So by midpoint formula, the O coordinate, writing x and y, will be x1 plus x2 divided by 2. This is 2 here. And y1 plus y2 divided by 2. Let's substitute the values. So x1 will be 3 here, x2 will be -1. Similarly, y1 will be 6, y2 will be 2, is equal to 3 plus of -1 will be -1 divided by 2, comma, y1 that is 6 plus y2 is 2 divided by 2. So this will come to 1. 3 minus 1 is 2. 2 by 2 is 1. 6 plus 2 becomes 8. 8 by 2 becomes 4. So point O will be 1 comma 4. So see, I am talking about this point, this O. Okay, this is 1 comma 4 we calculated just now. Now we know that point O lies on the line BD, and also we know the slope. So we can directly apply the 1 point form. The formula is y minus y1 is equal to m of x minus x1. Since point O lies on the line BD, therefore O satisfies the equation. I just forgot to mention that line here. That line is very important. Point O lies on line BD. So x1 will be 1 and y1 will be 4, because it satisfies the equation of the line BD. So let's substitute the values now straight away. Y minus y1 is 4 is equal to m we calculated, see this one, -1, and x minus x1. So x minus x1 is 1. So y minus 4 is equal to minus x plus 1. We are taking y towards the right. So x minus y, and this -4 goes on towards the right and becomes plus. So it will be +1 plus 4, that is +5 is equal to 0. So this is our final answer, which is what? Equation of BD. I hope you all have understood this question. What I did is, first I drew the rhombus here. Okay. Then I wrote the property of rhombus, that the property of rhombus is that the diagonals bisect each other at 90 degree. Means the diagonals are cutting each other into two halves, which means O becomes the midpoint of BD and AC. And also they are doing this at 90 degrees to each other. Means the two lines are perpendicular to each other. In this chapter, the word perpendicular itself is used in relation with the slope. So when two lines are perpendicular to each other, they have a relationship, that is m1 m2 is equal to -1. So we have to remember this. It's very important point. So what I did was, since I know what is A and what is C, means I know the 2 points or the 2 coordinates. So by 2 point form, I first calculated the slope of line AC. You see, line AC, L1, the slope came to this one, M1 is equal to 1. After finding M1, since I know that BD is perpendicular,
So I established a relationship as m1 into m2 is equal to -1. Then I substituted the values and got m2 as -1. Means this is for BD. Okay. L2, that is line BD. I've written also here slope of line BD. Now, after finding this, to find the equation of BD, I need to have some data with me, right? So I have the slope. Now I have to find one point, that is point O. I could have found point B and D, but there is no use to make the question complex. The, the near term, the nearest I could find is point O, which is the midpoint of point A and C. Uh, I directly applied the midpoint formula, which is x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. So x1 is 3 here and x2 is -1, y1 is 6 and y2 is 2. After substituting the values, I got the coordinates of 0 of O point as 1, 4. Since point O also lies on the line BD, so point O satisfies the equation of line BD, which means I can directly write the values of x1 and y1 as 1 and 4 respectively. So y minus 4 is equal to -1 into x minus 1. So here I did a small mistake here. This will be minus x, okay? So here it will be x plus y, okay? Sorry guys, uh, this is a minor mistake from my side only. Let me correct it now. Yeah. So this x comes there on towards the left side, okay? So it becomes x plus y, and this 4 will be here only, and this 1 goes there, so this will be -5. Okay, let me rub this also. Yes, this will be -5. Please correct it. This is the final answer, okay? X plus y minus 5 is equal to 0. This will be the equation of BD. So it's good that we revise. Uh, like I did a silly mistake here, and after revising the question, I came across my mistake. So the same thing can happen with you in exam. So revision is always a better option at last. We may identify our small mistakes like this only. Okay. So this was a nice lesson for me also and for you all also. Let's move ahead. So let's solve question number 15. In order to solve this question, we need to understand basic concepts in reflection. So यहाँ हमें बोल रहा है to find out the image of the point P. So कुछ चीजें हैं जो मैं clear कर देता हूँ पहले. See, if I am standing here, which is point A, and this is my mirror, which is point O, तो मेरा जो distance है mirror से, suppose this distance is 1 meter. So after reflection, अगर मैं एक mirror के सामने खड़ा हूँ, तो after reflection मेरा जो image होगा वो भी same distance पे बनेगा behind the mirror. That is, मैं अगर यहाँ हूँ तो मेरा जो image बनेगा वो कुछ इधर में बनेगा. ये होगा मेरा image, जिसको मैं A डैश बोल देता हूँ, और ये इसका जो डिस्टेंस होगा मिरर से वो सेम होगा जो ऑब्जेक्ट का है. सो AO विल बी इक्वल टू OA डैश. तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा. So let's draw the figure first. Suppose this is point P which is equal to -3, 1, और ये हो गया हमारा लाइन which is L1. इक्वेशन है इसका 2x minus 3y is equal to 4. और जैसा कि मैंने इस कंसेप्ट से आप लोग को बताया है, somewhere we'll get the point P dash here. इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं A, B, और अब कर देते हैं इसे ज्वाइन. तो ये जो पॉइंट है सेंटर में, लेट्स नेम इट एज O. लेट्स नेम P dash as L2. So if this is L1, if this line is L1,
let us name this as L2. So L1 and L2 are perpendicular to each other. देखिए जो मैंने यहाँ बनाया है, this line is obviously perpendicular to the mirror. So similarly L1 and L2 are perpendicular to each other. So this is making 90 degree. So obviously slope M1 into slope M2 of the line L2 will be equal to -1. और हम लोग क्या देख सकते हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो O is the mid point. Since इस डायग्राम के हेल्प से देखते हैं, सिंस ये डिस्टेंस A से O और O से A डैश सेम है, तो O इज द मिड पॉइंट हियर. तो यही चीज यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, O इज द मिड पॉइंट ऑफ P डैश. ओके, सो ये इंफॉर्मेशन से वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ. तो सबसे पहले सिंस O इज द मिड पॉइंट, लेट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं -3 + A डिवाइड बाई 2, 1 + B डिवाइडेड बाई 2. तो ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, जो कि एक मिड पॉइंट है. अब आगे बढ़ेंगे. हमारे पास में दो लाइंस है और सेकंड पॉइंट के हिसाब से वी नीड टू फाइंड M1 एंड M2. तो M1 बहुत ही इजीली वी कैन फाइंड आउट. क्यों? क्योंकि हमारे पास में 2x - 3y = 4 दिया हुआ है. इसको अगर y = mx + c के फॉर्म में करें तो यही m जो होगा वो हमारा M1 होगा. तो इसे करने के लिए विल टेक 3y टुवर्ड्स द राइट साइड. तो 3y हो गया यहाँ, एंड दिस विल बिकम 2x - 4. y = 2/3x - 4/3. 2/3 मिल गया हमें. सो M1 = 2/3. Obviously M2 will be -1 divided by M1. सो ये हो जाएगा -3/2. सो M1 हो गया 2/3, M2 हो गया -3/2. अब ये M2 जो निकला है, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन L2 विच इज नथिंग बट P डैश. सिंस O L1 के ऊपर लाई कर रहा है, तो वी कैन से दैट O lies on the line L1 and O satisfies the equation 2x - 3y = 4. और O के coordinates हमें already पता है क्योंकि we already calculated, so we can directly substitute in this equation. O lies on L1, so O satisfies the equation. इसका मतलब क्या होता है कि x हो गया -3 + a डिवाइड बाई 2 और y हो गया 1 + b/2. तो अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 2 × -3 + a डिवाइड बाई 2 -3 × 1 + b डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4. 2 एंड 2 कैंसिल हो जाता है. ये बन गया a - 3 और यहाँ हो गया 3 + b. ये हो गया बाई 2 और ये भी हो गया बाई 2. अच्छा, ये b नहीं होगा, इट विल बी 3b. एंड दिस विल नॉट बी प्लस हियर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है. तो यहाँ आएगा माइनस इज इक्वल टू 4. चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं. a यहीं रह जाएगा, -3b/2 भी यहीं रहेगा.
एंड रेस्ट एवरीथिंग विल गो टुवर्ड्स द राइट साइड. 4+3 हो गया और ये हो गया +3/2. इसका एलसीएम ले लेंगे. 2a माइनस 3b डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4+3 7, 7+3/2. तो ये हो गया 14+3/2. डायरेक्टली ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया. सो 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 17. सो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन. अब देखिए इक्वेशन बनाने के पीछे द रीज़न इज दैट वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. और इक्वेशन में इस तरीके से हम लोग फ्रेम करेंगे कि वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सो डायरेक्टली वी विल गेट आवर आंसर. ठीक है. तो पहला इक्वेशन मिल गया. सो वी नीड टू फाइंड द सेकंड इक्वेशन आल्सो. सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए डायग्राम को फिर से देखते हैं. पी पी डैश में वी हैव 2 पॉइंट्स, राइट. सो बाय 2 पॉइंट फॉर्म m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 1 और a+3. तो m2 होगा b माइनस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस ऑफ -3 यानी कि a+3. अब हम लोग को ऑलरेडी पता है कि m2 है -3/2, राइट. सो -3/2 इज इक्वल टू b माइनस 1 डिवाइडेड बाई a+3. ये हो गया -3a माइनस 9 विच इज इक्वल टू 2b माइनस 2. सो ये हो गया 3a प्लस 2b. ये 2 चला गया दूसरे साइड पे, सो इट बिकम्स -7. सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. सो अब सिंपली हमारे पास में 2 इक्वेशन ऑलरेडी आ गए हैं. सो वी जस्ट नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशंस एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ ए एंड बी. द एलिमिनेशन मेथड हियर. तो मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 इंटू 3 और इक्वेशन 2 इंटू 2. सो इक्वेशन 1 इंटू 3 करेंगे. सो आई विल गेट 6a माइनस 9b इज इक्वल टू 51. और यहाँ होगा 6a प्लस 4b इज इक्वल टू -14. तो अब इसे सॉल्व कर देते हैं. सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो विल हैव माइनस हियर एंड पॉजिटिव साइन हियर. सो 6a and 6a gets cancelled out. -9b minus 4b becomes -13b and 51 plus 14 becomes 65. Therefore, p is equal to 65 by 13, that is -5. So अगर b का वैल्यू -5 है, so we'll substitute this value in any of the equation and find out the value of a. So 2a minus 3 into -5 is equal to 17. So 2a plus 15 is equal to 17. 2a is equal to 2 because ये plus 15 will go toward the right side and it will become 2. So a will be equal to 1. So finally pp dash, let me write the statement properly. The image pp dash will be formed at 1 comma -5. So this will be our final answer. I hope you enjoyed solving this question.
मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ इस क्वेश्चन का कि मैंने किया क्या है इसमें। सो पहले हमने डायग्राम बनाया जहाँ पे हमें पता चला कि ओ पी पी डैश का मिड पॉइंट है और पी पी डैश जो लाइन है L2 L1 से परपेंडिकुलर है। So if two lines are perpendicular, then slopes are related to each other in the relationship m1 into m2 is equal to -1 और O मिड पॉइंट है पी पी डैश का, इसको मैंने कंसेप्ट से भी समझाया ऊपर। तो यही इंफॉर्मेशन लेके हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों ने लाइन L1 पे जो पॉइंट आ रहा है O, उसको मिड पॉइंट समझ के उसका मिड पॉइंट से फॉर्मूला कैलकुलेट किया, क्योंकि O लाई कर रहा है ऑन लाइन L1। So our first step will be, so our first step was to find the coordinates of O। तो O का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमने P डैश को अज्यूम किया a कॉमा b और फिर इसको कंसिडर किया a कॉमा b और फिर आगे बढ़े। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से जो कि होता है x1 प्लस एक्स टू बाई टू y1 प्लस y2 बाई टू, तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग O का भी कैलकुलेट कर लिए। तो O का कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में आया -3 प्लस a डिवाइड बाई टू और 1 प्लस b डिवाइड बाई टू। अब ये कोऑर्डिनेट्स आने के बाद में सिंस वी ऑलरेडी नो कि जो O पॉइंट है ये लाइन L1 पे आ रहा है, तो O का जो भी O के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उसका वैल्यू डायरेक्टली वी कैन पुट इन x एंड y इन दिस इक्वेशन। तो यही हमने किया यहाँ पे और यही करने से इजीली हम लोग एक इक्वेशन की तरफ आ गए। अब उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी विल नीड अनदर इक्वेशन आल्सो। तो जो लाइन हमें गिवन है उसी का हमने m1 किया, मतलब स्लोप निकाला और उस स्लोप को m2 से कनेक्ट किया क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। अब तो वी गॉट द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन ऑल्सो। बट अब एक प्रॉब्लम रह गया कि एक इक्वेशन बनने के बाद में दूसरा इक्वेशन लाएं कहाँ से। सो सेकेंड इक्वेशन आपको वहीं दिख जाएगा, यहाँ पे p है और यहाँ पे p डैश है। इसी से अगर कुछ कर सकते हैं तो वो है 2 पॉइंट फॉर्म। सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज y2 माइनस y1 वाला जो फॉर्मूला था 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप निकालने के लिए, वो हमने किया और वी गॉट अनदर इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया और हम लोग को मिला a का वैल्यू और b का वैल्यू, और यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में।